यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब लोग? होपफुली मजे में होंगे। आज का वीडियो एक रिएक्ट वीडियो होने वाला है। जी हाँ, हीरो बलून एंड मिनियन होर्ड इवोल्यूशन के ऊपर। एंड देखते हैं भाई इनमें से कौन सा कार्ड ज्यादा ब्रोकन है एंड कैसे हम इनका अच्छे से यूज कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं एप की चैनल के ऊपर एंड इनका ये हीरो बलून वाला वीडियो देखते हैं यहाँ पे क्या है इसमें खास एंड क्या है इसके स्टैट्स एंड क्या ये सच में ब्रोकन होने वाला है। लेट्स सी। Balloon will be the next hero coming to Clash Royale. You can find him in the Diamond Pass. ओके तो आप लोग देख सकते हैं यार, डायमंड पास में अपने को देखने को मिलेगा। या तो आप हीरो बलून लोगे या फिर वहां पे मिनियन होर्ड, जो कि मिनियन होर्ड का इवोल्यूशन भी गेम में आ रहा है As a choice, so technically you can either pick him or pick the Evo Minion Horde, which if you're gonna be buying, I would appreciate using collabwithclashindia to support the channel. His ability drops a Skelly Trooper for 2 elixirs. ओके तो ये है कॉफिन कैडेट्स, जो कि इसकी एबिलिटी रहने वाली है एंड एक स्केलेटन ट्रूपर है जो इसको डिप्लॉय करती है एंड कूल डाउन सेकंड इसका यहाँ पे देख सकते हो 12 सेकंड एंड लैंडिंग डैमेज 307 एंड रेंज भी है इसकी। देखते हैं पहले। And can be used every 12 seconds. The Skeleton Trooper is significantly more tanky than it looks, to the point that it survives delivery. It also deals way more damage than you'd expect. It looks like a skeleton, but it's nowhere near as weak as one. Here is वेट वर्ड, इसका डैमेज भी काफी है, देखो आपने वहां पे। the interesting part. If you deploy him when something is within 6.5 tiles of the balloon, the trooper will fly towards it. The गाइस मतलब अगर वहां पे वो होगी तो वहां से ऐसा ग्लाइड करके जाएगा एंड डायरेक्ट उसके ऊपर हिट करेगा एंड उसको खत्म भी कर देगा। डैमेज भी काफी अच्छा है logic इसका। of this trooper is basically it'll just go to whoever is closer to the balloon. So basically ओके बट ये भी यहाँ पे ट्विस्ट है कि लाइक जो भी क्लोजेस्ट होगा, ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे बैंडेड है तो बैंडेड पे ही जाएगा। लाइक क्लोजेस्ट, लाइक यहाँ पे इसने डिफेंड किया वहां पे गोलम की मदद से, तो आइस गोलम पे ही वो गया। your balloons can now snipe stuff and defend itself without necessarily relying on miners or certain spells. The trooper has landing damage that is high enough to one-shot archers, dart goblins or firecrackers, and the landing damage is a splash attack, meaning it can take out spear goblins on its own. Now ओके तो ये इसका लैंडिंग डैमेज है, लाइक वो स्प्लैश डैमेज देता है, तो ऑफकोर्स अगर स्वाम ट्रूप्स होंगे तो वो डायरेक्टली फिनिश होने वाले हैं। It's crazy. while the damage is enough to kill archers, it's still lower than arrows, and that does matter for two main reasons. Reason number one is that wall breakers survive it, if you want to kill them with it somehow. Reason number two is originally arrows zap can kill zappies, but landing damage plus zap doesn't kill them. I guess the trooper will finish off the job after landing, but like it isn't a perfect interaction. They can literally taunt him away or kill him with a spell and keep their zappies alive. Also, deadass, the zap is a waste because the trooper can one-shot the zappies after landing on them anyway without the zap. An important thing about the ability is that it doesn't target air troops, so minions are safe. तो बेसिकली यहाँ पे लाइक ये एयर ट्रूप को टारगेट नहीं करता है, वो ग्राउंड ट्रूप पे रहता है। अगर स्वाम ट्रूप पे गिरता है देन उसका काफी अच्छा डैमेज, वहां पे आपको काफी अच्छी वैल्यू देखने को मिलती है एंड इसका काफी अच्छे से आप यूज कर सकते हो। It just acts like there is no target around it and drops the trooper directly below the balloon. Let me tell you about Cookie Run Oven Smash. Thanks to Deaf Sisters. वेट व्हाट? स्पॉन्सर्ड बाय? भाई साहब, भाई को स्पॉन्सर मिलते हैं भाई, हम गरीब साले, हम गरीब। By the way, when the trooper drops directly under the balloon, the landing damage is still applied, which is useful against invisible troops. Since buildings are technically a ground unit, that means the troops will be able to glide to them and crash on them. Thank God, towers are an exception. The trooper can't target them. In fact, even if he targeted something beside the tower, he has a 90% crown tower damage reduction, so he would deal like 26 damage instead of like 250. वाओ, ये तो काफी अनोइंग होने वाला है। मतलब लाइक ये जो छोटा सा भाई उसमें से निकल के आता है, ये स्केलेट ट्रूपर भाई, ये काफी अनोइंग करने वाला है लैडर में सबको। The reason this tower reduction was added is because you literally can't stop the skeleton trooper no matter what. Like, you can try vines, zap, or any type of spell, but with no use as he is immune while flying. And even though he looks like a projectile, he can't be reflected by a monk. वेट व्हाट? भाई ये लॉजिक थोड़ी अजीब है। मतलब अगर वो फ्लाई करके आ रहे हैं, अगर वहां पे भाई तुम वाइन्स यूज कर रहे हो तो भाई उसको कैप्चर होना चाहिए ना। He is very tricky to counter. One method could be to place your cards towards the king tower and accept that they are dying in exchange of a king activation.
ओके तो किंग टावर एक्टिवेशन के लिए सही है ये, बट मुझे लग रहा है भाई तब तक तो वहां पे टावर ही निकल जाएगा, तो कोई मतलब भी नहीं है। मतलब हाँ, मतलब काफी अच्छे से यूज कर सकते हो You आप। could also tornado the little fucker away entirely if you want to keep your wizard alive. Certain cards can deal with him on their own. For example, Magic Archer can teleport away. Obviously, if you have the hero. It's kinda bugged. He would keep the target below him forever, but it's just a visual glitch. Evo Wizard has a shield that would knock the poor thing away, giving you enough time to react to it. Hero Wizard flies, so you can just levitate and have them waste the landing damage plus get nados on their balloon. Evo Executioner is half immune cause one axe can kill the trooper, it's just that they could fireball it and take out your dude. Hunter can also save himself because of the way he attacks, as the trooper will tank a hit and die. But watch out from placing the hunter in. वाह ऐप डॉट भाई, यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी, काफी अच्छे अच्छे इंटरेक्शन यहाँ पे कवर करी है भाई ने। एंड देख सकते हैं हम लोग मतलब उसको किस तरीके से डिफेंस कर सकते हैं एंड लाइक किस तरीके से बैटर से यूज कर सकते हैं, हर एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है वो। Makes him not face forward because that will keep the trooper out of his gun range. ब्रो एपडॉट की यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी, हर एक इंटरेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं किस तरीके से तुम लाइक अच्छे से उसका यूज कर सकते हो एंड किस तरीके से डिफेंस कर सकते हो। दैट्स व्हाई ही इज एक्चुअली एपडॉट एंड एपडॉट इन नटशेल, मैं ये कह सकता हूँ अभी। Ewiz can get him to retarget on other cards, so he would survive with like 1 HP. But due to the fast attack speed on the trooper, it's a bit inconsistent and a good balloon player will be able to time it. Technically, you could just भाई एक चीज तो मैंने देख लिया कि नेक्स्ट सीजन जो मैटर रहने वाला है, अगर हीरो बलून के साथ यूज कर रहे हो तो लावा काफी ज्यादा चलने वाला है एंड उसके साथ लून साइकिल भी वाले जो डेक है माइनर लून साइकिल, वो भी काफी तगड़ा हो सकता है। एंड आप गेस वर्ड करो कौन कौन से डेक है जो मेटा में रहने वाले हैं नेक्स्ट सीजन। distract him by playing a unit on the right spot and the right timing, but the Ewiz makes the window much easier to achieve. Cards that constantly spawn troops, like Witch for example, will make it harder for them to hit her because the skeletons will take priority. This would apply to the furnace, but it's a bit less likely to work considering the spirits die almost instantly. What's surprising is that Mini P.E.K.K.A can genuinely work as he one-shots the trooper before your ranged cards die. Other cards technically can one-shot it, but it's like, I don't know if you're pulling this prediction off in a real game, especially since they can just arrows whatever is left of your troop. A bit inconvenient, don't you think? Or you can stop overthinking stuff and just run Phoenix, Mega Minion and make sure they can't use their ability. Speaking of uses, the ability acts as a great way to make your balloon one-shot buildings. Basically, no matter what building they use, a balloon hit and the trooper will probably one-shot. वेट ये काफी अच्छा है, लाइक बिल्डिंग्स लाइक टिकती नहीं है उसके सामने, लाइक ट्रूपर भी जाए, ट्रूपर का लैंडिंग डैमेज एंड साथ में बलून भी हिट करेगा, लिटरली यार मतलब ब्रोकन तो है। Even something as heavy as a mortar will break, but it needs a few trooper hits. Not only is this useful because of the slow hit speed of the balloon, but it also can help with things like the spear goblins from the goblin hut. And on the भाई ये तो वही बात होगी, मतलब बलून चाह रहा है उसके साथ एक एक्स्ट्रा वो दे दिया भाई स्केली ट्रूपर, लाइक अभी वो तबाही मचाने का, मतलब पहले कम तबाही मचाता है कि अभी और ज्यादा तबाही मचाओ। भाई ये आइडिया कहाँ से लेके आते हैं भाई ये वाले, भाई ये हीरो का आइडिया और ये वाला आइडिया कहाँ से आया होगा? पाकिस्तान तो नहीं है भाई वहाँ डेवलपर में। topic of buildings, it's a really nice elixir pump sniper if you somehow manage to get your balloon close enough. The mechanic of the trooper dropping right below the balloon when there is nothing inside makes it a built-in void counter. It can also help with the ram rider snares because half of them would go on the trooper, which makes it easier for your balloon to escape. Surprisingly, it's kinda useful on defense if you for some reason decided to play a balloon in the back. Like, it's not half bad against graveyard. Same goes against swarm cards. It's best dropped when the balloon is right above them, so it splashes more stuff. And it doesn't have... मतलब बलून के भाई अब ये हीरो बलून के कितने मल्टीपल है स्वार्म ट्रूप्स, अगर आप डिफेंसिव भी यूज कर पा रहे हो, मतलब सामने से स्वार्म ट्रूप्स आ रहे हैं, जस्ट ऊपर बलून होगा, नीचे वो लैंड करेगा एंड लैंडिंग डैमेज में सारा स्वार्म खत्म। to be from a balloon placed in the back because you might push at the same time that they do, and honestly in a lot of times the landing damage is significant enough to justify dropping it on their win condition. Here is a neat trick that you will never hit in a real game. Good luck pulling. What the hell? What the hell, bro? Bro मतलब पूरा वहां पे गॉब्लिन बैरल ही खत्म, one tap boom. That one off. In case you really wanted to do it, you should press the ability when the shadow is right on the river like this. The initial idea I had is that it would probably be best played in balloon cycle decks because
I don't know, I've been playing a lot of Loon Cycle myself. And don't get me wrong, it will be great there, not just to take out buildings and ranged cards, but also because it might... भाई पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है भाई, अगले सीजन पता नहीं मेरा क्या हाल होने वाला है ये हीरो बलून के साथ। एंड आप अपना देख लो। Snipe the stuff they play on your miner. Sure, he doesn't deal much damage on the tower, but Chip is Chip. If you are crazy enough to play Rune Giant and get a buff on the Skeleton Trooper to annihilate their tower, then by all means, be my guest. Wait, what? भाई कितने सारी इसकी फॉर्म्स है भाई, कितना कुछ आप इसके साथ भाई, मतलब कितना कुछ कर सकते हो इसके साथ। After thinking, I believe this will be extremely broken in Lava Loon decks. The problem with playing it in a cycle deck is that a lot of the times the balloon will die early enough before getting a crazy ability. But in lava decks, the balloon is way more likely to reach deep onto the enemy side that it will kill most of its counters. To put things into perspective, lava decks might genuinely not need to run lightning or fireball anymore. They have a 2 elixir ability that can do the same job for cheaper. And if that wasn't enough, you could deadass just use the ability as a ground troop against bridge spam matchups. For King Tower activations, the balloon itself keeps the same old activations even when it drops the trooper on the tower because it's flying so they don't collide. Now regarding the trooper himself, he is very fast so he isn't heavy, which makes it possible to pull him towards the King Tower. तो भाई क्या बोलूं अभी हीरो बलून के ऊपर, मतलब काफी कुछ मतलब यूज इसका कर सकते हो आप लोग। एज अ डिफेंसिव यूज कर सकते हो वहां पे स्वाम ट्रूप्स को हटाने के लिए, एंड इसको काउंटर करने के लिए लाइक किंग टावर एक्टिवेशन वहां पे आप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सीजन जो मोस्ट ऑफ द डेक्स आपको देखने को मिलने वाली है वो माइनर के साथ लून साइकिल वाली देखने को मिलेगी, लावा लून वाली देखने को मिलेगी, एंड लंबा लून भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। बट होपफुली आपका डे अच्छा हो। And the tower troop doesn't really matter because his attack speed is so fast, so as long as the main tower is being tanked for, the second one won't kill. That's so good कि मतलब भाई उसकी अटैक स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है, तो भाई अगर आप उसको नेड़ो भी करोगे तो वहां पे चाहे फिर दूसरी तरफ से भी कैननियर क्यों ना वो कर देगा एक्टिवेट। That's so good. Kill him in time. For the arena, I forgot to showcase it in yesterday's video, so here goes. It seems like it's a giant airship that is actually flying in the sky by using a bunch of balloons. भाई ये तो मैं बोलूंगा भाई, क्योंकि ये रहने वाला है बलून वाला सीजन, लाइक बलून फेस्टिवल, एंड भाई ये पूरा हवा में लेके चलेगा। अब मैं इस पे बोलूंगा भाई वो ग्रेविटी कहाँ गई। अरे बाबा! It's honestly one of the more unique arenas. Here are the sound effects. प्रोबेबली भाई ये जो रहने वाला है ये स्केली ट्रूपर भाई ये बहुत अनॉय करने वाला है, सच बता रहा हूं मैं। भाई मकसद दिला रहा है यार ये। भाई पूरा एनिमेशन ही चेंज कर दिया उसका, वो पहले नॉर्मल वाला बट अभी यहाँ पे इफेक्ट्स भी अलग आ रहा है, साउंड भी अलग आ रहा है। ओह माय गॉड, वापस से देखते हो इसको, ये देखो आप। बूम! भाई स्केलेटन ट्रूपर सच में ब्रोकन लग रहा है भाई। तो अगेन वीडियो क्रेडिट गोज टू एपडॉट भाई, इनकी वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, बहुत ही क्रेजी वीडियो बनाते हैं। Evo Minion Horde in nutshell. Evo Minion Horde in a nutshell. Minion Horde will be the next evolution. Yes, evolutions are coming back to Clash Royale. You can find them in the Diamond Pass as... Yes, अगर आप डायमंड पास लेते हो तो आप हीरो बलून या फिर मिनियन होर्ड दोनों में से एक सिलेक्ट कर पाओगे वहां पे। a choice, which if you're gonna be buying, I'd appreciate you using code AppDude. भाई कोड एपडॉट यूज करो क्योंकि अभी क्लैश इंडिया में टाइम है। By seeing the card cross the bridge, you understand what exactly it does. तो भाई जैसे भाई अभी ये कार्ड भाई जैसे जाता है एंड जैसे इन पे लगता है इनको डैमेज पड़ने लग गया है तो भाई ये गायब हो जाते हैं, इनविजिबल। Because it looks pretty simple, but honestly, there is more to it. Now, first things first, this ability triggers at any amount of damage, so zapping them
triggers it, and damage as little as Goblin Curse should also do the same thing. But if the damage is enough to kill the minions, then you basically won't get your ओके तो बेसिकली गाइस यहाँ पे अगर लो स्पेल आप यूज कर रहे हो वहां पे जैसे कि वहां पे गॉब्लिन कर्स या फिर एरोस, तो भाई जैसी वो हिट करेगी वो गायब हो जाएगी, एंड गायब होते ही उन पे जो डैमेज भी पड़ता है ना वो डैमेज का इम्पैक्ट नहीं आएगा कुछ भी. ability at all. बट फायरबॉल थोड़ा डिफरेंट रोल प्ले Evo करता है. Skeleton Barrel dropping both nukes even when it gets one shot. Becoming invisible doesn't really cut it cause most of the counters are just spells. लुक एट दैट गाइस, वहां पे भाई ने उसने जैप यूज किया बट वो मरा नहीं क्योंकि भाई वो इनविजिबल हो गया. And we all know invisible targets can get killed by spells, so what's the point of that Evo, you might ask? Well, they also become invincible, as in it's impossible to damage तो भाई अगर आप पहले जैप करते हो एंड अगर इनविजिबल रहेंगे वो, अगर फायरबॉल करते हो फिर वो मरेंगे भी नहीं. भाई यहाँ पे ये भी ट्विस्ट है भाई गजब. them at all during their invisibility. Splash attacks on the card around them would have no effect on them at all as long as the ability is active. Using एज मैंने आपको बताया कि भाई जब तक वो गायब रहेंगे उन पर कुछ डैमेज भी नहीं रहेगा, डैमेज नहीं पड़ेगा. फिर वहां पे चाहे आप विच यूज करो या फिर कुछ फायरबॉल यूज करो या रॉकेट यूज करो. two small spells on them is also a waste because the second spell will just do nothing. देखो अगर आप वहां पे एक्स्ट्रा स्पेल भी यूज करते हो, लाइक आपने जायंट का पुश बना दिया वहां पे एंड पहले जैप करते हो, देन आप सोचते हो कि उसके ऊपर आप रेज कर दोगे ताकि वो मर जाए, बट जैसे ही आप जैप करोगे वो गायब हो जाएंगे एंड आफ्टर दैट उन पे कुछ भी डैमेज नहीं पड़ेगा. And yes, that means that it will survive arrows because it's भाई ये काफी ज्यादा ब्रोकन बन जाता है इससे. भाई अगर आपके पास 3 एलिक्सर का वो स्पेल है जो भाई उनको किल करता था, अभी इवोल्यूशन में भाई एरोज उनको किल नहीं कर पाएंगे एंड उसके बाद उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्पेल भी डालोगे तो भी वो मरेंगे नहीं. भाई ये काफी ज्यादा ब्रोकन फील हो रहा है मुझे, लाइक वो हीरो बलून है ना भाई उससे भी ज्यादा. 3 waves of damage instead of one big burst of damage. The nice part is that while immune, they get in a nerfed state that slows them down to make them less and बस एक ही पॉइंट है यहाँ पे कि भाई जब वो मतलब गायब होते हैं तो थोड़ा सा स्लो हो जाती है उनकी स्पीड, बट क्या ये इनफ है भाई इसको ब्रोकन बनाने से? annoying to deal with. And this slow state does apply to attack speed as well. It's not just movement speed. Here's a funny thing I discovered. Apparently, hitting them twice in the same frame would make both attacks apply. If you're thinking, how the hell am I gonna get this hand in a real game? Don't thing I discovered. Apparently, hitting them twice in the same frame भाई ये कौन खेलता है पहले मुझे ये बताओ तुम. भाई 2 आप यूज करोगे पहले आप ये और भाई उसको किल करने के लिए, but tricky. Would make both attacks apply. If you're thinking, how the hell am I gonna get this hand in a real game? Don't worry, I'm already ahead of you. Theoretically speaking, you could time a zap and a rage, or a zap and a snowball, or whatever, but it really is hard to pull off. I don't even know if future me is gonna bother trying, or if the footage above ब्रो मतलब अगर कोई उसको किल करना चाहे तो भाई वो प्लेसमेंट दोनों चीजें सेम टाइम पे ड्रॉप होनी चाहिए, बिल्कुल 1 सेकंड या वो बिल्कुल माइल सेकंड का भी अंतर नहीं आना चाहिए वहां पे. This line is gonna be just a bunch of failed attempts. Like, to put things into perspective, even having 2 princesses on the board which have the same attack speed and projectile speed doesn't work because the distance between them isn't the same. It has to be picture perfect mirrored. It took me so many attempts, but I ended up finding a possible method. There are Wait, what? भाई ये बंदा करता क्या क्या है भाई, मतलब भाई क्या क्या ढूंढ रहा है भाई, वो कौन यूज करेगा भाई, मतलब तू सेम टाइम पे 2 चीज कैसे ड्रॉप करेगा भाई ये बंदा ना. 2 reasons I'm mentioning this. Reason 1 is to make sure you don't think the game is bugged when something like this happens, and reason number 2 is that some but कुछ तो क्रेजी है भाई इस लड़के में भाई, कुछ तो है भाई. ये वाली इंटरेक्शन आप देख सकते हो, लाइक दोनों सेम जगह पे है आर्चर्स, एंड ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे देख के. The game is bugged when something like this happens, and reason number 2 is that some extremely niche situations like Ewiz plus Zap make it somewhat useful in a real game. Regarding slowing them down, the slow effect doesn't stack. I have no way of visualizing this clearly, but since their slow is stronger than the Ice Wiz, that means the Ice Wiz slow does. भाई वीडियो अभी तक आधी भी कंप्लीट नहीं हुई है और भाई इसको देख के मुझे चक्कर आ रहा है. भाई क्या है भाई ये कार्ड, और भाई कितना नॉय करेगा भाई, इसको तुम रोकोगे कैसे ये बताओ जब ये गायब हो जाएगा. अब ऐसा तो है नहीं कि फायर बॉल ही मारने वाले हो. Doesn't really add anything when used. Hero Ice Golem works
fine against them. Yes, the slow won't help much, but it distracts them and the freeze would stall them long enough. Honestly, countering it when it's on your side isn't really that hard. Like, something as small as a snowball can ruin the whole thing if you used it early. Like, sure, if you're playing melee cards for defense, then maybe a snowball isn't really that गुड थिंग भाई यहाँ पे ऐप डॉट अच्छे से इंटरेक्शन दिखाता है अपने को कि भाई उसको किस तरीके से आप डिफेंस कर सकते हो, एंड वहां पे स्नोबॉल से प्रीटी मैं बोलूंगा अच्छा, बहुत अच्छा नहीं बट अच्छा। एंड यहाँ पे और भी इंटरेक्शन लाइक हम देख सकते हैं because they will chip on your stuff while invincible. But with ranged cards or buildings, they will be back to their vulnerable state before they get in range of certain stuff. Freeze lasts longer than their invincibility, so it cancels it out and brings their HP low enough to where a baby dragon would be able to one-shot them. While the Executioner can technically one-shot Minion Horde because of his returning axe, against the Evo, it just wouldn't work and you will भाई जैसे हमने वहां पे ऑफिशियल टीजर में देखा था भाई एक्जी की किस तरीके से यहाँ पे मिनियन होर्ड इवोल्यूशन ले end लेते up हैं। losing the interaction entirely. If it's an evolved Executioner, placing him भाई ये काफी क्रेजी इंटरेक्शन, लाइक अगर आप इवॉल्व एग्जीक्यूशनर को क्लोज रखते हो तो जब वो क्लोज से हिट करेगा ना भाई वो किल हो जाएगी। भाई ये काफी अच्छी इंटरेक्शन मुझे लगी। close can make him one-shot them, so try to sync your Evo cycle with the opponent. Monk is another example of a card that used to be able to deal with Minion Horde, but no longer can after the Evo. Goblinstein kinda the same as Monk, it doesn't deal damage for long enough duration to be able to kill them entirely. Overall, your only solution is either things that one-shot them or activating their ability on the bridge while nothing is in their sight. What's funny भाई इसको रोकने का दो ही तरीका है, लाइक या तो उसको कंप्लीटली किल करो या फिर उसको ब्रिज के पास ही उसकी एबिलिटी ऑन कर दो ताकि जब क्लोज आ जाए वो तो भाई उनकी एबिलिटी ऑन ना रहे तो उसको हिट करके मार सको आप। is that even though Wizard is like an insane counter to this Evo, having Hero Wizard using his ability भाई हीरो विज़ार्ड का यूज रेट भाई नेक्स्ट सीजन काफी क्रेजी रहेगा, मतलब अच्छा है। has a slight chance at ruining it because of the NATO damage, so watch out. Firecracker can take them all out because the fireworks all split at the same frame, so multiple hits are counted. भाई फायर क्रैकर भाई काफी क्रेजी हो रही है, मतलब मैं अपडेट को यहाँ पे थैंक्स बोलूंगा कि काफी अच्छी इंटरेक्शन अपने को यहाँ पे शो अप की है इसने। एंड देख सकते हो यार फायर क्रैकर भी वहां पे वन हिट कर रही है, लाइक काफी इंटरेक्शन है जहाँ पे आप उसको अच्छे से काउंटर कर सकते हो। इवन मतलब जब वो ब्रिज पे हो तभी उनकी एबिलिटी ऑन कर दो या फिर कंप्लीटली उनको उड़ा दो। एंड काफी कार्ड्स है वहां पे जो उनको वन हिट में क्लियर करते, लाइक ईवो एक्सी अगर आप उसको क्लोज रखते हो, फायर क्रैकर एंड फायर विज़ार्ड as one here. Though if it didn't directly target them, then it will only splash some of the damage on them, triggering their ability. Hero Knight's Taunt is a rare case of something that can abuse their slow movement speed, twist their invincible frames, and make killing them easier. It's gonna mostly be hard to counter it when it's on their side because it doesn't matter what the push you have is, it'll just end up dying. Now I'm not saying don't spell them when attacking because it still reduces the DPS and you eventually want to deal with them anyway, especially since in some scenarios double spelling them can be worth it if you had to delay the second spell. But what I'm trying to say is don't overcommit offensively when they have them in hand. Treat them the same way you treat the hyper defensive evos like Mega Knight for example. Using them will boil down to baiting out spells than playing them, which is similar to regular Minion Horde. Although they are now safer to play on more stuff, I guess that's still a bad trade, but it's an option. If you were in a really bad spot and you had no elixir to tank for them, they can still be functional if you are भाई डिफेंसिव में भी लाइक वो गायब होके, लाइक अगर मैं बात करूँ वहां पे विच जो कि भाई मेरे को तो काफी अनॉय करते हैं, लाइक वहां पे विच जब उन पे अटैक करेगी तो गायब हो जाएगी एंड वहां पे स्वाम को काफी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। लाइक डिफेंसिव भी काफी बढ़िया है यहाँ पे कार्ड। fine giving up the counter push. Splitting them in the back might be a viable play because the ability is applied on each minion individually, especially since even only 2 minions are gonna be a huge threat on the enemy tower when evolved compared to how they get only like 2 hits when unevolved. Unless they have cannoneers, then I guess screw that strategy, it wouldn't really work. Because the opponents are gonna look for ways to one-shot them, I think it might become a fireball bait card. That means I can see new decks start using them, so maybe 3 Musketeers deck would play them instead of mortar bait decks. For King Tower activations, they're regular गेस बट गाइस की नेक्स्ट सीजन अपने को यहाँ पे ये इवोल्यूशन मिनियन होर्ड के साथ कौन कौन से डेक देखने को मिलने वाले हैं, एंड एक डेक बताओ भाई क्रेजी वाला मैं यूज करूंगा। Minion Horde can be activated with if you kite them towards the middle and tornado them,
but you will take a bunch of damage. The Evo version is harder to kite because of the way they get hit one by one, which slows them down and makes them harder to pull. Now, I'm not saying it's impossible because it can be done, but the thing is, the timing is much more different that you have to learn it all over again. Here are these sound effects. भाई सच में वीडियो काफी क्रेजी था. थैंक्स एपडॉट फॉर दिस अमेजिंग वीडियो. एंड भाई इवोल्यूशन मिनियन होर्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है भाई हीरो बलून से काफी ज्यादा ब्रोकन रहने वाला है ये. एंड अगर आपका एनिमी यूज कर रहा है देन आपको काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है इसको डिफेंड करते हुए. एंड जैसे कि यहाँ पे आपको टिप्स बताई उसने, लाइक उसको ब्रिज पे रोक दो या फिर उसको कंप्लीटली इतना डैमेज दो कि वन शॉट ही हो जाए वो. बट लिटरली काफी अनोइंग होने वाला है. एंड गेस व्हाट की नेक्स्ट सीजन में कौन सा मेटा डेक्स बनने वाला है इवोल्यूशन मिनियन होर्ड के साथ. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड अभी जाके वॉच करो ये वाली वीडियो, काफी इंटरेस्टिंग है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.